Here we will discuss about the polynomials. What are the polynomials? And understanding the basics of polynomial. Polynomials are the mathematical expression, a well-formed finite combination of numbers, symbols and operators that indicates some information. यानी कि polynomials जो होते हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो हमें कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ डेटा इंडिकेट करते हैं जो कि बने होते हैं किससे, सिंबल से, नंबर से, ऑपरेटर से। ऑपरेटर हमारे होते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। And for example, 1 minus 7 plus 3, here there are two operators, minus यानी कि subtraction and addition. 3x minus 6, 0 plus 0, 4x minus 12 plus 2, this is the expression. And here the term used well formed is important. Well formed implies that all the terms in the expression must be valid and correctly placed. For example, यानी कि सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, वो वेल अरेंज्ड या फिर वैलिड होने चाहिए, जो कि पॉलिनोमियल की कंडीशंस को पर सस्टेन करें या उनको वैलिडिटी वैलिड होने चाहिए, वैलिडिटी उस पर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, देन द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन पॉलिनोमियल, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, एल्जेब्रिक होता है, एनालिटिकल होता है, एंड क्लोज्ड फॉर्म। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. Introduction of the polynomials. A polynomial is an algebraic expression consisting of constants, variables, and algebraic operators, that is addition, subtraction, multiplication, and where the variables are raised to power of the whole number. यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, एंड एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स भी होंगे जो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इट इज अ वैल्यू दैट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द गिवन सिचुएशन। यानी कि कोई एक्सप्रेशन दिया है आपको, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यदि आप वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, लेकिन कांस्टेंट का टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसको जनरली हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, आप किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं, जनरली हम ए बी सी लेके चलते हैं। एंड वेरिएबल जो वैल्यू होती है, वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल की वैल्यू मतलब वेरी करेगी, इट विल चेंज whenever you put 1, the expression gives another result, 2 next result. This is the situation. Variable denoted by, generally we denote the variable with x, y, z, p, q, r and some other alphabets. Polynomial in one variable, यानी कि ऐसे polynomial जिनमें एक ही variable होता है. An algebraic expression consisting of terms in the form of a x की power n where n is an whole number, also called the नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि कोई एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो उसको हम बोलेंगे कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये। जैसे किसी में दे रखा है कि a x की पावर n, तो इसमें x एक वेरिएबल है और n जो है उसकी पावर है, और n जो होगा वो एक होल नंबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। द वैल्यू ऑफ a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x, और a जो होगा वो कोफिशिएंट है किसका? x की पावर n का। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इन द एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हियर वी कैन से इफ लेट एन एक्सप्रेशन इज a x की पावर n, b x की पावर n minus 1 and c, तो and we know that the n is a whole number or non-negative integer, it means n greater than n minus 1. So here we can say that the n is the degree of the polynomial, and a is the coefficient of x power n, and b is the coefficient of x power n minus 1, and the given term c is constant term, and we discussed above that the constant term generally denoted by a, b, c and have the same value throughout the expression. Next slide. Just give me some time, please.
For example, these are the examples of polynomials, and here we will discuss the which variable is in this polynomial and terms and number of terms and coefficients and degree of the polynomial. Here example A. Example A said that the A sorry A is equal to 5x. Here you can say that this is the polynomial and it has only one term 5x, and here the power of x is equal to 1. It means highest power of the variable in the polynomial is 1, means degree of the polynomial is 1, and 5 is the coefficient of x की power 1, and there is no extra term in that polynomial. It means this polynomial has only one term degree at 1. Then see the example number B. Example B say that the polynomial given is 2y cube plus 9y square minus 4. In this expression we can say that the y cube coefficient of y cube is equal to 2, y स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 9 है एंड कांस्टेंट टर्म इधर है वो -4 है. And let's see the which the polynomial variable has the highest power. Highest power in the polynomial is y की power 3, यानी कि n बराबर 3. It means the degree of the polynomial is 3. And terms, how many terms are there? This is the term number 1, term 2, term 3, and here are the 3 terms. Then we can see the 3 terms in the polynomial. Term number 1, term 2, and term 3, and coefficients are there. y cube coefficient 2 है, y square का 9 है, and constant का जो है वो -1 है, and degree is equal to 3. Then see monomials. पॉली में होता है बहुत सारे. पॉली का मतलब होता है सेवरल. देन मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म. फॉर एग्जांपल जैसे एक्सप्रेशन ए और सी के बारे में इसने बात करी है. ये देखिए एक्सप्रेशन सी ये रहा एंड एक्सप्रेशन ए ये रहा, तो इसमें क्या है? एक एक टर्म है बस, तो मोनोमियल है दोनों. बाइनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म होते हैं, जैसे कि डी. एग्जांपल डी देखो, इसमें केवल दो ही टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ट्राइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें तीन टर्म होते हैं, यानी कि एग्जांपल नंबर बी. Here is the b, you have three terms. And quadratic polynomial are the polynomials in which the highest degree of the variable is 2. For example, if we take the example 3x square plus 4x plus 1 is a polynomial, then we can say that if the degree of the polynomial is 2, then it will be the quadratic polynomial or quadratic equation. Cubic polynomial, if degree of the polynomial is 3, then this will be the cubic polynomial. Next slide. Important notes. A linear polynomial has the form. लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी? लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होगी मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1. देन वी कैन से द लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax की पावर ax plus b, where a and b are the constants, b is the constant, and a is the coefficient of x, and the degree of the polynomial is 1. Quadratic polynomial, I earlier told that ax square plus bx plus c plus c. Here the polynomial degree is 2. This is the quadratic equation. And cubic polynomial is ax cube bx square plus cx plus d. Here we can say the highest degree of the polynomial is 3. Then this is the cubic polynomial. And general expression of the polynomial is this: a naught
plus a1 x, a2 x square, a3 x cube, an x की power n. Next slide. Examples of the algebraic expression which are not polynomials. I told you earlier the power of the every variable which is present in that polynomial must be a whole number or non-negative integer, means it may be 0, 1, 2, 3 and so on. Let take the expression a. Expression a is equal to 4x की power 6 plus 2x minus 7 and minus 3. This is minus 7. Here the power of x की power 6, it is non-negative natural number, okay, non-negative integer. But if we see this power of x, this is equal to x minus 7. 7 is an integer, but it is not a non-negative integer. It means this is not a polynomial. This does not sustain with the definition of the polynomial. Let's see the B example. 1 upon x is equal to x power minus 1. It means this is not also a polynomial. X power 1 by 2, yani under root x or x power 1 by 2. 1 by 2 is a positive number, but it is not a non-negative integer. Because 1 by 2 is not an integer, it means C is also not a polynomial. Now see the example number D. X की power 4, x की power minus 3 minus x की power 1/6. This is not a integer, and minus 3 not a positive integer, non-negative integer, so it is also not a polynomial. Okay. Relevance of the polynomial. Since polynomials are fundamentally expression representing some functions, so they are important in also every field of profession. Designers use the and trajectory. If we define the trajectory in physics, we will see, we will study when you will be in the 11th or 12th class. Then you will see the study of the trajectory of motion. Then you will use the polynomial expressions. Used in economics for the costing, yes, of course, and use in stock market for data analysis. Operation on the polynomials, यानी कि which laws must be followed by the polynomial. Distributed law, it is the property given by, if we have an expression a b plus c, then we also can say ab plus ac. We can write it. It means polynomials follow the distributive law property. Step by step guiding the addition and subtraction of the polynomials. 0 of the polynomial. Consider the polynomial 3x minus 0 means 0 of the polynomial means value of the variable for which the expression gives output 0. Here we can say that consider the expression polynomial of x is equal to 3x minus 9. Equate is equal to 0. 3x minus 9 equal to 0. Then 3x is equal to 9. Then x barabar 3. Here we can say that if we put the value of x in the expression equal to 0, then we see that the expression will be 0. It means x is equal to 3 is a 0 of that polynomial.